Hello, and welcome to the series of Navigating Path for Professional Excellence. I am Nadia Mitha from Aga Khan Economic Planning Board for Pakistan. In today's episode, we will be discussing about how important is to write a resume to catch a recruiter's eye. We have presented today our guest from highly professional human resource background and has a vast experience as a senior executive in banking sector. Welcome Salim to the show. Thank you so much. Okay, so let's start with our first question. Sure. How to create a resume to stand out in the market or to catch a recruiter's eye? Nadia, I think the important thing is that whenever you write a resume, जो normally हमारे applicants mistakes करते हैं, so बहुत सारी दफ़ा applicants जो है वो mistakes करते हैं जिसकी वजह से recruiter जो है वो उनके CVs को इतना ज़्यादा seriously नहीं लेता. You know, for example, अपनी बहुत सारी जो रिक्रूटर्स अपनी पिक्चर्स लगा देते हैं या फिर करिकुलम वाइटे की बहुत बड़ी हेडिंग वो डाल देते हैं, या इसके अलावा जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ इनअप्रोप्रिएट होता है, या फिर आप ये कहें कि वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, या कभी फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट यूज़ कर लिया, कभी डिफरेंट यूज़ कर लिया. इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शंस बहुत सारी दफ़ा हमने देखा है कि कैंडिडेट्स अपने प्रोफाइल्स के अंदर मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइन जो है वो 2 या 3 पेजेस पे या 4 पेजेस पे चले जाती है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल आपने रेज्यूमे के अंदर अपना जो अगर ईमेल एड्रेस मेंशन किया है, दैट ईमेल एड्रेस इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस की वजह मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारी दफ़ा हम पैट्स के नाम यूज़ करते हैं, बहुत सारी दफ़ा हम सिटीज़ के नाम यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी दफ़ा हम एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं. तो फ़नी चीज़ें हमने नोटिस की हैं, जिसकी वजह से रिक्रूटर जो है वो एक्चुअली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं आजकल. सो आई बिलीव दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है. और एक और चीज़ मैं बड़ा मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि सीवी के अंदर जो फाइल का नाम है, जब आप फाइल अपनी सेव करते हैं, वो फाइल का नाम भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, जिसमें आप फाइल का नाम अप्रोप्रिएटली मेंशन करें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना प्रोफाइल आप सेव कर रहे हैं, सो इट शुड बी प्रोफाइल then your name or your personal profile with your name would be the right file name through which you can save. अच्छा, लॉन्ग JDs की बात की हमने. अच्छा, एक और चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट गैप्स की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट गैप्स भी बहुत दफ़ा हमने नोटिस किया है कि एप्लीकेंट्स अपने प्रोफाइल्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट गैप्स उसको अप्रोप्रिएटली कवर नहीं करते. Okay. So if you have any employment gap, it should be appropriately captured. फॉर एग्जांपल आपने स्टडीज़ के लिए वो लिया है, गैप लिया है, या फिर आप वो किसी कंट्री में चले गए पढ़ने के लिए, या किसी शॉर्ट कोर्स के ऊपर चले गए जिसकी वजह से आपने ब्रेक लिया, या फिर कोई पर्सनल रीजन. सो वट एवर द रीजन इज, यू हैव टू मेंशन एंड कैप्चर appropriately in the profile. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. So resumes में employment gap को जो है वो mention करना चाहिए with the dates? I think the reason should be mentioned. For example, अगर आपने स्टडीज़ के लिए लिया तो you can have that study period mentioned in the profile so that the recruiter can easily say or assess that gap in the profile. That is just like our female candidates जो कि maternity के लिए gaps लेती हैं या शादी के लिए gaps लेती हैं, उनको अपने एक रीज़न के साथ mention करना चाहिए कि हमने इस रीज़न से. Absolutely. All right. अच्छा, इसके अलावा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने ये भी देखा कि जो आजकल रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें करियर ऑब्जेक्टिव किसी ज़माने में हमारे ज़माने में जब प्रोफाइल्स बनाई जाती थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, सो ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता था. वो ऑब्जेक्टिव एक ऑब्सोलीट प्रैक्टिस है. इट इज़ नो लॉन्गर अ करंट प्रैक्टिस इन द मार्केट. सो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स you have to write your personal profile. Okay. And that personal profile will capture your achievements, your technical competencies, your behavioral competencies, and the areas in which you can you have actually excelled in your career. So वो सारी चीज़ें आप जो है वो personal profile में mention करते हैं. So as a fresher, as a starter, मेरा professional क्या मैं डाल सकती हूँ उसमें? देखिए, as a starter, I think the important thing is that you can always mention your voluntary experience and or your internship experience. Okay. Internship experience में at times मैंने देखा है कि कैंडिडेट जो है वो इतने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, और उसकी वजह से द एक्सपीरियंस विच दे हैव गेन्ड, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएटली कैप्चर्ड इन द प्रोफाइल. सो ऑलवेज मेंशन वट एवर यू हैव डन. आई मीन बहुत सारी, मेरे पास भी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, हम उनको ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, हम डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं. सो वट एवर यू हैव गेन थ्रू दैट इंटर्नशिप, इफ इट इज़ रेलिवेंट and or if it is not relevant as well, I mean you have to mention that experience in your profile. That is very important.
So हमारा जो next question है वो ये है कि how important is to write a cover letter? देखिए cover letter, to be very honest, this is not a current practice. और current practice में इसलिए कहूँगा because right now the situation is that a lot of companies are actually asking respective applicants to apply online through application tracking systems or through online systems. Cover letter एक पुरानी रिवायत है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आजकल भी अब तक भी जो है आपसे मांगती हैं कवर लेटर सो दैट यू कैन सबमिट योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली. अगर कवर लेटर की रिक्वायरमेंट है, it should be concise and to the point. Subject should be appropriately mentioned, whereby the position against which you're applying, it should be mentioned in the cover letter, and it should not be a detailed cover letter whereby you're writing your objectives and your profile, your accomplishments in the cover letter. No, it should be concise and to the point. So Salim, हमारा तीसरा question ये है कि how can I effectively write about my accomplishments and qualification? I think the important चीज़ ये है कि पहले जो practice objectives की होती थी वो आजकल obsolete हो गई. So what you can do is actually you can mention your accomplishments, your achievements in the profile paragraph along with your skills. So it is very important. उससे होता है ये कि it would be eye-catching to the recruiter whenever he reads your profile. He can always match your accomplishments, your skill set with the job requirements. So are there any specific strategy for tailoring my resume to particular job opportunities? देखिए जो common mistakes candidates करते हैं वो normally जो हमने देखा है, they actually submit a generic profile against each and every position which they apply. This is a major problem. You have to tailor your profile, your CV, your resume according to the job requirements. Now, whatever the job requirements are, read through the advertisement, read through the requirements which are mentioned in the advertisement, and then tailor accordingly to the requirements. उससे होता है कि आपका profile it would be specific to the job requirement. Instead of you submit a profile which you have submitted against multiple positions. So while sending my resume, what should I write in my email? I mean, subject में या उसकी body में, text में? देखिए email subject में बड़ा simple आपने लिखना है कि the position against which you are applying for. Yeah, it should be mentioned in the subject line. अच्छा जो body है उसके अंदर भी आपने ज़्यादा text नहीं लिखना. Just you have to mention that I'm submitting my resume for the position which is mentioned in the subject of the email, and please consider my profile accordingly. So you don't need to write each and everything which is already written in your profile. It will be a duplicate. And number 2, देखें recruiter के पास इतना time नहीं होता कि वो आपकी email जो है वो go through करें. I would be very front and blunt to you because ये हमारा जो है day and night का काम है. So उसमें important चीज़ ये होती है कि जो profile आपने बनाई है that would be appropriate to the job requirements. Okay. Salim, can you tell us about what is ATS tracking system? I mean. Application tracking system, it's a very important question. देखिए application tracking system के अंदर जो हमारे पास job matching का जो formula होता है वो formula होता है based on the competencies against which the application tracking system reads your profile. For example, अगर आप किसी position के against में apply करती हैं तो उसकी technical competencies ATS के अंदर already application tracking system में already हम built in कर देते हैं. So whenever I actually ask the application tracking system to match the appropriate profiles based on the job requirements, it goes into your profile, matches the requirements of the competencies which are already mentioned in the job ad. Okay. और जब वो मैचिंग करेगा आपकी ATS सिस्टम, जो क्लोजेस्ट मैच होगा वो प्रोफाइल्स उसको वो शॉर्टलिस्ट करके लेकर आएगा. Okay, so for example, if I am applying for IT sector या IT development software designer के लिए और उसमें requirement अगर मेरी resume में Oracle की या Python की अगर मैंने अपनी skills mention की है, so of course the ATS system will gonna track it. जी, absolutely. For example, अगर हम .NET developer की बात करते हैं, yes. So अगर .NET developer की प्रोफाइल अगर मैंने मांगी है तो application tracking system .NET आपके प्रोफाइल में जाके रीड करेगा because this is a core competency which is required for that particular role. Okay. So if your profile doesn't speak or spell out .NET in your resume, your application tracking system will not shortlist your profile. So it is good to actually mention whatever skills I have in my resume so that ATS system is good track. So it should be
it should be matching to the job requirements. Okay, awesome. We have to go through each and every element of the competencies which are required as part of the job requirements. Okay, can I limit my work experience in my resume, or should I write my detailed experience and have a long CV? Just like आपने पहले सवाल का जवाब था कि 4 से 5 पेज का CV नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें बहुत दफ़ा हमने देखा है कि बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं अपने प्रोफाइल्स के अंदर. ये मिस्टेक्स हमने भी किए हैं जब इनिशियल करियर स्टेज में हम थे. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपकी जॉब की जो समरी है इट वुड एक्चुअली कैप्चर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शंस व्हिच आर परफॉर्मिंग राइट नाउ. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कोई नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप 2 पेजेस में कवर नहीं कर सकते, सो नॉर्मली आपका जो प्रोफाइल पैराग्राफ होता है व्हिच इज मेंशन्ड ऑन द फर्स्ट पेज, इट एक्चुअली कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफाइल. एग्जैक्टली. सो आप जो मेरा सजेशन होता है एप्लीकेंट्स को वो ये होता है कि फिर आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम और टाइटल और पीरियड मेंशन आपको exactly. उसके अंदर आपने क्या किया, फर्दर जॉब डिस्क्रिप्शन दिखने की जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं क्योंकि आपने वो ऑलरेडी प्रोफाइल पैराग्राफ में कवर कर लिया. नंबर 1. एंड नंबर 2, प्लीज डू नॉट राइट जॉब डिस्क्रिप्शंस. प्लीज डू नॉट राइट जॉब डिस्क्रिप्शंस. ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हमारे पास एप्लीकेंट्स प्रोफाइल्स भेजते हैं. उसके अंदर हमने देखा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी पेस्ट की हुई होती है. प्लीज मेंशन व्हाट आर यू डूइंग इन योर जॉब. ओके सलीम, सो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इट्स अबाउट अगर मेरे पास कम एक्सपीरियंस है या आई हैव अ वेरी स्मॉल एक्सपीरियंस, तो उसको मैं किस तरीके से मेंशन करूँ अपने रिज्यूमे में? देखिए, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नादिया, वो ये है कि एक्सपीरियंस चाहे स्मॉल पीरियड के लिए हो या लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए हो, इट शुड बी कवर्ड इन योर प्रोफाइल. क्योंकि प्रोफाइल और CV इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ठीक है, व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग इन द प्रोफाइल इट विल बी सब्जेक्ट टू अ वेरिफिकेशन. सो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको एक तो क्लियरली डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली हमने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट्स इसलिए भी मेंशन नहीं करते कि ऑर्गेनाइजेशंस क्लोज डाउन हो गई हैं, शट डाउन हो गई हैं, और वो वेरिफिकेशन उसकी नहीं हो सकती या फिर हो पाती है. सो इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि शट डाउन हो गई है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन योर प्रोफाइल. अगर आपको ऐसा तो आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे मेंशन भी कर सकते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लोज डाउन एंड और मर्ज्ड with any of the organizations in the market. So it would be a very appropriate message to the recruiter that you're not hiding anything from the profile. देखिए, उसमें होता है कि अगर आप कोई चीज़ हाइड करते हैं और वो ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस अगर वो रिक्रूटर जो है वो उसको कैच कर लेता है, सो वो एक हम अपनी टर्म्स में कहते हैं कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट चाहिए. और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो है एक बहुत ही लीगल इनअप्रोप्रिएट टर्म है फॉर एनी ऑफ द इनकम्बेंट अगर वो इस तरह की कोई जो है ना चीज़ रिक्रूटर कैच करता है. ओह, ओके. सो आज के दौर में जो है वो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर अ कैंडिडेट टू हैव अ सोशल अकाउंट और सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नादिया, क्योंकि देखें सोशल और मीडिया is a platform whereby all the recruiters are actually hunting for talent. चाहे वो LinkedIn हो, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो even TikTok भी हो, अकाउंट्स होना और अप्रोप्रिएटली आप उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को या ग्रुप्स को फॉलो करें जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने करियर अपना जो है वो आपकी एस्पिरेशन है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज्वाइन करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सोशल मीडिया अकाउंट or updated LinkedIn profile is extremely important. It is also important for you to actually follow those groups which are relevant to your career aspirations. So उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है अगर आप फॉलो कर रहे होते हैं. सो और इसके अलावा नॉर्मली देखें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंक्डइन को या सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं फॉर एडवर्टीजमेंट. अब वो पेपर एडवर्टीजमेंट का ज़माना ऐसा नहीं रहा. सो हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही करते हैं एडवर्टीजमेंट्स. सो फॉर इनकम्बेंट्स इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अपडेटेड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. अगर आपका प्रोफाइल अगर नहीं है तो आई वुड अर्ज ऑल द एप्लीकेंट्स टू गो इनटू लिंक्डइन एंड क्रिएट योर प्रोफाइल. अच्छा, इसके अलावा एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो वो ये है कि लिंक्डइन पे किस तरह की रिक्रूटमेंट नॉर्मली की जाती है या कौन सा ऐसा और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं. तो आई बिलीव जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उसके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि आप rosie.pk पे
अपना प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली डाउनलोडिंग एंड और advertising their positions on Rosie.pk. So it is very important for fresh graduates to have their accounts on Rosie.pk. All right. I think हमने आज काफ़ी सारा जो है वो रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अपने सेकेंड सीरीज़ में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो मच.